Namaste and welcome to Nari Shakti, an inspiring series by Amrit Mahotsav, an initiative of Government of India to celebrate 75 years of progressive India. With Nari Shakti, we are celebrating women experts from various themes and fields who are enablers for women empowerment. Hi, I'm your host Dhara. I run Humane Club, which helps small businesses, think tanks, and media with websites. Our guest for today's session is Aditi Gupta, co-founder of Menstrupedia, an initiative that uses comic books and media to destigmatize menstruation. Aditi is a TED speaker and a Forbes India 30 Under 30 achiever. She was also named as one of BBC's 100 influential women of 2015. Hi Aditi, welcome to Nari Shakti. Thank you for joining us today. Namaste. So glad to be here. So Aditi, you've been menstrual educator for past 8 years now. So can you share what was your inspiration that led you to start Menstrupedia? Okay. So I started Menstrupedia because of my own experience of facing the taboo, which is taboo of periods. तो जब मैं छोटी थी तो मुझे बोला जाता था कि यहाँ मत बैठो, पीरियड्स के समय तुम गंदी हो, तुम ये छू नहीं सकती हो, वो छू नहीं सकती हो. अम, मैं बहुत एक छोटे जगह से आती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार से और लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाला पोषा. बट जब भी बात आती थी पीरियड्स की तो घर के अंदर ही एक डिस्क्रिमिनेशन था. और ये चीज हमने पाया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये काफी मिलियंस ऑफ लड़कियों के साथ भारत के अंदर हो रहा है. हमारे देश में कुछ 1.2 करोड़ गर्ल्स हर हर साल प्यूबर्टी मतलब हर साल वो प्यूबर्टी को रीच करती हैं. और क्योंकि मेंस्ट्रुएशन टैबू है तो हर एक लड़की, 4 में से 1 लड़की पीरियड्स के समय स्कूल मिस करने लग जाती है. और बहुत सारे टैबू और गलत धारणाएं हैं जिसकी वजह से जेंडर गैप जो है, लड़कियों को हम बहुत बचपन से ही सिखाते हैं कि तुम अपवित्र हो, अछूत हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, अगर कुछ हो गया तुमको तो तुम्हारी गलती है. तो ये सब जब मैंने खुद ही ये सारी चीजें को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था, और जब हमने पाया कि अ, ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल ही पढ़ाते ही नहीं है अच्छे से, एजुकेशन बिल्कुल शेप में नहीं है. बायोलॉजी की क्लास में जो आता है चैप्टर वो काफी देर हो गया होता है. अब तो लड़कियों को पीरियड्स 5वीं क्लास में आना शुरू हो गया है. तो जब हमने कैरिकुलम देखा, जब हमने ये देखा कि इतना बड़ा सा एक प्रॉब्लम है, और जब ये मेंस्ट्रुपेडिया में चलाती हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे को फाउंडर तुहीन के साथ, और उस समय हम ग्रेजुएशन अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में डिजाइन की पढ़ाई कर रहे थे. तो हमने इसको एक कम्युनिकेशन डिजाइन प्रॉब्लम की तरह देखा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है बिल्कुल, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा ही है, पर स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है. तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा टूल बनाए जो कि सेंसिटिव हो, जो कि हमारे कल्चर को डिसरिगार्ड ना करे और लोगों को कंफर्टेबल बना दे पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए. और ये और हर लड़की को पीरियड्स के बारे में पता चले, क्योंकि पीरियड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर पीरियड्स नहीं होते तो आप और मैं और जितने लोग भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो कोई नहीं होते. तो पीरियड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस टू प्रोपगेट, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस की वजह से बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, लड़कियों को शन किया जाता है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं. तो ये हमारा मिशन था कि हम पीरियड्स को एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की तरह दिखाएं, एक वेलकमिंग चेंज हो गर्ल्स के लाइफ में, और लोग कंफर्टेबल फील करें इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना. और उसकी वजह से मेंस्ट्रुपेडिया की शुरुआत हुई, और जो भी चीजें हमने बाद में की वो इसी तरीके से आया कि कैसे हम लोगों को कंफर्टेबल कर सके पीरियड्स के बारे में बात करना, और लड़कियां अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख सकें और अपने शरीर के बारे में जागरूक हो और कॉन्फिडेंट महसूस करें. Wow, it's a very creative way of solving a huge cultural problem. And I think you're empowering so many girls and women across India. And I think the comic is also available in 17 languages and it is being used by more than 11,000 schools across India. So how did you go about, building to scaling the venture, and how did you go about impacting so many young girls and women in India? Right. Um, so first and foremost, the comic book that you are talking about, here is the one. So सबसे पहला तो हमारा जो स्ट्रैटेजी था, द स्ट्रैटेजी वाज कि इसको हर इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल कराना है. और हम टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर, व्हेन वी स्टार्टेड उस समय
4G 5G कुछ भी नहीं था। तो प्रिंट मीडिया की वजह से एक बहुत ही इंक्लूसिव चीज मीडियम है। तो कॉमिक बुक होने की वजह से, और क्योंकि ये it was not offending people, it was acceptable, accepted very widely. So I would say कि word of mouth से ये बहुत फैला। फिर हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, काम किया, कोलैबोरेट नहीं, they got the books for their schools. Telangana government got. Then we are doing this huge project जोहार periods करके, मेरा काफी मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं झारखंड से आती हूँ। तो जोहार periods करके एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि हम 50,000 लाखों लड़कियों तक इस किताब के थ्रू पहुंच रहे हैं, लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ, और जब लोगों ने देखा कि ये बहुत ही इफेक्टिव टूल हो रहा है, लड़कियां खुद ब खुद सीख रही हैं पीरियड्स के बारे में, तो उनके लिए बड़ा आसान हो गया हम पे ट्रस्ट करना। और कायदे से एक्चुअली इंडिया में कोई, जब मेंस्ट्रुपीडिया लॉन्च हुई तो इंडिया में कोई टूल नहीं था। जो भी टूल बनते थे वो यूजुअली एनजीओ के लिए बनते थे, एनजीओ बनाते थे, और वो टूल्स ऐसे होते थे जो कि उनके लिए बने होते थे, जैसे कि ये कि लो कॉस्ट फैमिलीज के लिए बने होते थे, या फिर हमें ऐसा फील होता था कि बिकॉज अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है और इसलिए उनको पीरियड्स के बारे में पता नहीं है। लेकिन एक एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव हो, और अर्बन पॉपुलेशन भी जिसको कि खरीद कर पढ़ना चाहे, तो वो टूल एक्चुअली मेंस्ट्रुपीडिया पहला ऐसा कॉमिक बुक था, पहला है एक्चुअली भारत का। पीरियड्स के ऊपर बना हुआ तो डेफिनेटली पहला है। तो आई थिंक और हम the biggest reason of success of Menstrupedia is also because we do not want to make people uncomfortable. We are not we are educators. एजुकेशन हमारा एक्टिविज्म है, तो हम एक्टिविस्ट नहीं है जिसमें आपको बोलते हैं कि आप अपने टैबू को तोड़ो, बट हम एजुकेशन से और इंफॉर्मेशन से आपको एम्पावर करते हैं कि आप एम्पावर्ड महसूस करें बिना ऑफेंड हुए, टैबू को तोड़ने के लायक बने और अपने घर में ये कर सके। आई थिंक लोगों को इनेबल जो कर सकते थे हम, जो कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी से, जहाँ पे कि हम पीरियड्स पे एक पॉजिटिव लाइट में दिखाते थे, दैट स्ट्रेटजी वर्कड very much in our favor. The rest of it was really word of mouth and a lot of people just joining this movement. I would give the credit to a lot of people, many principals, school principals, NGOs, Gandhi fellows, Teach for India fellows, then gender experts in the departments of Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat Abhiyan. So there will be always this one person who would say that, okay, I have to do this huge project on menstrual awareness, and I am going to crack this down. And then along with us, we form a strategy and it's done. Like for example, we have reached thousands and thousands of schools in Punjab through Beti Bachao, Beti Padhao from Moga district. So it all happened because of this one motivated person who did not give up. So it is happening to a lot of places. Right now, what is happening is that those girls who read Menstrupedia comic some 5-6 years back, now they have gone to 11th and 12th standard. So they are educating younger girls in their class, and I think it's a very sustainable model of education, which makes me like really, really very happy that we are creating like a collective wisdom around periods is changing, because हमारा जो collective wisdom था as a nation और as a culture की, हमको जो मम्मी ने बताया, मम्मी को मम्मी ने बताया था, उनकी मम्मी ने बताया था, तो जो नानी ने बताया वो मेरी मम्मी ने को पता था, और फिर उन्होंने मुझको बताया, और कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा था। बट नाउ इट इज हैपनिंग दैट द गर्ल्स आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीरियड्स एंड दे आर टीचिंग देयर यंगर सिस्टर्स एंड junior students about periods. So collective wisdom around periods is changing, and I think that is where the whole paradigm shift of the narrative around period is happening, and now women are feeling more empowered about periods and not limited by it. Right. So you just mentioned that, like it became kind of a movement where NGOs or the organization, people personally wanted to, be part of it. So can you share a story of success, or, like because you've impacted so many girls and women, any personal story that you'd like to share with us? I think definitely. I think suddenly just 3 years back there would be so many schools. So there is a school in
Ahmedabad. It is called Eklavya School, and they invited me to the school, and they said, you know, the girls are going to take workshop. Can you come and review it? So these girls, they read Menstrupedia comic 5 years back. There are school girls now that went through our program. So we have a menstrual awareness program that we do in schools, and now these girls are running their own initiative of teaching girls about periods. So they have their own project. So Menstru Act is another project again in Ahmedabad, and I think there are tons and tons of stories where So we were doing this huge project with Biocon Foundation in government schools in Andhra Pradesh. And they did a pilot, and they would say that the kind of questions the girls and the boys were asking. So boys were also reading Menstrupedia comic book. Boys were asking. It opened the door for them to have so many conversations about consent, about contraception, about child safety, and they only did pilot. And because of the kind of response that they had, they went to teach, like establish menstrual awareness programs to some 2,000 schools in Andhra Pradesh. So there are so many stories that I could share, but these are some of the highlights. Right. Also, like Aditi, because like what inspires you to keep going and working? Like, why do you love working in this field? Because the success rate is really high. You just educate one girl, and then menstrual taboo would be completely broken. Like for example, the whole cycle is that I got the set of taboo, or those people who are listening who could relate to the menstrual taboo, they got from their mother, and their mother got from their mother. But if you just educate one girl about periods at the right time, actually she will not pass menstrual taboo to her daughter or her son, and that whole cycle breaks. So the success rate of your intervention is really, really high. Any day that I'm not working or not feeling like working, but those days if I'm feeling like working, the kind of impact that the work creates is very fascinating. Yeah, absolutely. Aditi, it's Women's Day today, and so do you have any message that you'd like to share with aspiring women entrepreneurs who are on their journey to build their ventures, or who are on this path, venturing into this specific field? Do you have anything to share for them? Yes, definitely. So, first of all, if you're a woman and if you're trying to build a business in India, there has never been a better time. Don't think that that you're a woman and you're building a business, but it's also true that in India, you can actually leverage being a woman and in business. There are so many people who are just there to support you, and you really cannot fail until until you keep trying and persevere. So don't fail. But these are some simple tools. Work on your prototype first. Also try to work with your core competencies, and pivot around the problem and not the solution. मतलब हम सब जुट जाते हैं कि ऐप बना देंगे, वेबसाइट बना देंगे, स्टोर खोल देंगे, रिटेल में चले जाएंगे. But try to always remind yourself that what problem you're solving, even if the goal does not look very big as of now. But I think one quote from Maya Angelou has always guided me uh, on my path, is that every time a woman stands up for herself, not even knowing and not even claiming, she stands up for a lot of women. So any problem, pick up any problem. If that problem is bothering you as a woman of this country, I think there would be thousands and thousands of women who would be going through the same problem. So try to solve that. Try to stand up for yourself, and you'll be standing up for millions of women. Thank you, Aditi. Thank you so much. I think sharing your journey and your experience. Thank you for joining us today.